Hello students, the question is an electron is made to enter symmetrically between two parallel and equal but oppositely charged metal plates, each of 10 centimeter length. The electron emerges out of the field region with the horizontal component of velocity 10 raised to the power 6 meter per second. If the magnitude of the electric field between the plates is 9.1 volt per centimeter, then the vertical component of velocity of electron is, and the given options are option 1 1 into 10 to the power 6 meter per second, option 2 0, option 3 16 into 10 to the power 6 meter per second, option 4 16 into 10 to the power 4 meter per second. So the problem is based on the basic concept, some basic concepts of mechanics as well as electrostatics. So now in this particular problem there are two plates. For example, these are the two plates, and let us assume that the upper plate is a positive plate and the lower one is the negative plate. So since the electron is a negative charge particle, when it enters into this particular region, then it will try to move towards the positive plate, and in this process it moves in this particular kind of a curved path, and it exits after leaving this plate region. Now we have to find out the vertical component of velocity when it is emerging out of the plates. So as given in this problem, the electron is entering with the velocity, for example Vx, it is given as 10 raised to the power 6 meter per second. This is the horizontal component of velocity, and when it is emerging out, this horizontal component of velocity does not change, only the vertical component changes from 0 to a certain velocity, because when it is entering at the perpendicular direction with the electric field is in the downward direction, for example. So when it is emerging out, these are the velocity component Vx. Suppose Vx dash is the horizontal component. Since it is moving out with the same horizontal component, so we can say that Vx dash or Vx are same. So it does not change, the horizontal component does not change. The vertical component, let us assume it Vy. Now the time, first of all we have to calculate the time taken by the electron in this particular process. So to calculate the time, we know that the horizontal component of velocity is related with time by the distance, for example distance is L, upon time taken. So we can say that time equals to the distance upon the velocity, horizontal velocity component. Now the length of the plate is given as 10 centimeter. So when we convert it into meter, it becomes 10 into 10 to the power minus 2 meters, and Vx is given as 10 to the power 6. So this value comes out to be 10 raised to the power minus 7. This is the time taken by the electron to emerge out. Now for the calculation of the vertical component of velocity, we use the equation Vy is equal to Uy plus Ayt. Now Vy is the final velocity after which it emerges out, then at that particular instant of time, the vertical velocity component is Vy. Uy is the initial component, the initial vertical component of the velocity when it is entering. It is 0 basically, because the particle, the electron enters at the 90-degree angle with the horizontal direction only. So the vertical component is 0 initially. So Uy is 0. Ay is the acceleration in the y direction. Now acceleration in the y direction can be calculated by equating the mechanical force with the electric force. We know that the mechanical force is given by ma. So may is equal to the electric force, which is small e multiplied by capital E, or we can say that QE. This is the electric force and ma is the mechanical force from the Newton's second law of motion. So from here we can calculate Ay. So Ay is equal to small e multiplied by capital E divided by m. So now we can put this value here. So small e into capital E upon m, and time we have calculated as 10 to the power minus 7. Now we can put all the values. The value of the electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Electric field is given in volts per centimeter. So 9.1 volts per centimeter. So this is equal to 9.1 into 10 to the power 2 volt per meter. This thing is important because we have to convert it into the SI unit. So that's why we have to multiply by 10 raised to the power 2. So 9.1 into 10 raised to the power 2
multiplied by 10 raised to the power minus 7 divided by the mass of electron, which is also given here, 9.1 into 10 to the power minus 31. So after solving this, this value comes out to be 16 into 10 to the power 6 meters per second. So in this way we can say that option 3 is correct here, 16 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है सिमेट्रिकली. सिमेट्रिकल मीन्स ठीक मिड पॉइंट इन प्लेट्स के ठीक बीचों बीच से एंटर करता है और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में एंटर करता है, और हर एक प्लेट की लेंथ जो है वो गिवन है 10 बेसिकली 10 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है. इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 2 मीटर. द इलेक्ट्रॉन एमर्जेस आउट ऑफ द फील्ड रीजन विद हॉरिजॉन्टल. ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस समय बाहर निकलता है उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो है 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो सेम रहेगा, जिससे वो एंटर करेगा उतने ही वेलोसिटी से वो एग्जिट करेगा. उस पर कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. फोर्स जो है उससे 90 डिग्री एंगल पे जो है वो अप्लाई किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे है. और इस प्रॉब्लम में कहीं ग्रेविटेशन का भी जो है ग्रेविटेशन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि उसका वर्टिकल मोशन के बारे में भी नहीं. इसके बेसिकली ये नहीं बताया गया है कि वो अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है या उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है. तो ये मान के चला जा रहा है कि ये पूरा जो एपरेटस है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो इस तरह से किया जा रहा है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है. अदरवाइज जो क्वेश्चन में वो चीज़ वो डेटा गिवन होता. तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे. टाइम बराबर लेंथ अपॉन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो वो वैल्यू निकल के आई हमारी 10 पावर माइनस 7. उसके बाद हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशंस की. इनिशियली जब वो एंटर किया था तब उसकी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थी 0. तो यू वाई हम यहाँ पे 0 रखेंगे. इक्वेशन हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे u को हम रखेंगे 0. a जो है एक्सेलरेशन जो है उसको हम निकालेंगे बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल फोर्स. एम ए इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, ये पुट करेंगे हम यहाँ पे. और जो टाइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है अर्लियर 10 पावर माइनस 7 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. इस तरह से सारी वैल्यूज जो यहाँ पे पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 16 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. So option 3 is correct here. So hope you understand the explanation. Thank you.